So we now move on to the last topic of your chapter, which is related to the rational numbers and their decimal expansion. Now there are three theorems in this section: theorem 1.5, 1.6 and 1.7. 1.5 and 1.6 are basically converses of each other. Let me just explain you what did they say. So theorem 1.5 says that if x is any rational number whose decimal expansion terminates, इसका मतलब x कोई भी एक rational number है तो उसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. So this is a rational number जिसकी decimal expansion जो है वो terminate कर रही है. इसका मतलब for example I have 2.5. So after 2.5 कुछ भी नहीं है. So this is a terminating decimal expansion. But if I write 2.5, 6, 4, 3, 2, 1, so on. So this is not terminating. Terminate means रुक जाना, end होना. So if x is any rational number जिसकी decimal expansion terminate कर रही है, then x can always be expressed in the form p by q, which is obvious क्योंकि x एक rational number है. But the p and q integers are actually co-prime. Co-prime का मतलब क्या हुआ, उनका HCF और you can say GCD is 1. So GCD को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, writing the two integers in round brackets and उनके बीच में हम कॉमा डालते हैं. और you can also write it like this, GCD of P and Q. So anyway आप उसको लिख सकते हो. So if x is any rational number which terminates, then x can be written in the form p by q, where p and q are co-primes. That means their GCD or their HCF is 1, and q is always of the form 2 to the power m, 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. इसका मतलब जो आपका denominator होगा वो हमेशा ही उसके जो prime factorization आप करोगे उसमें you will get this form. एंड जो थ्योरम 1.6 है ये इसका उल्टा है. उल्टा कैसे, कि अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं सच दैट ये सारी कंडीशंस ट्रू है, q is of the form this and p and q are co-primes, then the decimal expansion of this rational number will terminate. So these are both implications of each other. And the theorem 1.7 says कि अगर कोई x एक rational number है जिसे हम p by q में तो लिख सकते हैं बट q इस फॉर्म का नहीं है, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 1.3333, सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि 3 रिपीट हो रहे हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 1.3 और 3 के ऊपर मैं बार डाल सकती हूँ. जितनी भी डिजिट्स या जो भी डिजिट्स रिपीट हो रही होती हैं हम उनके ऊपर बार डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 4.676767 so on, you can write it like this. This is also continuing. So you can write it like 4.67 और 67 के ऊपर बार. So इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं. सो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनमें बस ये डिफरेंस है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं. बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो दे रिपीट देमसेल्व्स, whereas जो irrational numbers होते हैं उनके decimal expansion are non-terminating but they do not repeat. So they would be of the form, जैसे आपको root 2 का पता है, it starts from 1.414 and then it continues. It does not terminate, it does not repeat itself, so that is an irrational number. So these three theorems are very important. अगर आपको सिर्फ p by q form से देखना है कि वो number rational है या irrational है, so these will help you in those questions. So now we are gonna see the all odd parts of the first question of exercise 1.4 and it says कि आपको check करना है कि इन सब के decimal expansions terminating होंगे या फिर non-terminating होंगे. So now firstly you have 13/3125. Now 3125 can be written as 5 to the power 5. See, जब भी terminating होगा उसके लिए the form should be 2 to the power m, 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. Non-negative integers का मतलब है वो positive हो सकते हैं या फिर 0 हो सकते हैं. So here you are seeing कि 5 की power 5 है and 2 की power अगर देखी जाए तो वो 0 है.
So ये इस फॉर्म का बन गया. That means this decimal expansion will be terminating. Now if you come on to this, अगर आप इसमें देखें तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 5 into 7 into 13 है. These dots are actually used to represent products. So you can see this is 5 into 7 into 13, which is not of the form this, क्योंकि इसमें और भी प्राइम्स आ रहे हैं लाइक 7 and 13, बट आपकी जो फॉर्म है उसमें सिर्फ दो प्राइम्स हैं 2 and 5. सो ये इस फॉर्म का नहीं है. दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव 7 to the power 3, क्योंकि 343 को आप 7 का क्यूब लिख सकते हो. अगेन दिस इज नॉट ऑफ दैट फॉर्म, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ इन योर सेवेंथ पार्ट इट इज 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. अगेन आप इसमें देखोगे ये दोनों तो हैं उस फॉर्म के, बट देयर इज अनदर प्राइम. दैट मीन्स ये उस फॉर्म को मैच नहीं करेंगे क्योंकि उस फॉर्म में सिर्फ दो प्राइम्स हैं 2 and 5. सो दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ इफ यू कम ऑन टू द नाइन्थ पार्ट इट इज 35 over 50. नाउ 50 कैन बी रिटन एज 2 into 5 square, which is of the form this. So this will be terminating. सो जब भी आपको चेक करना होगा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आप हमेशा इस फॉर्म को चेक करोगे. इस फॉर्म में सिर्फ दो प्राइम्स हैं 2 and 5. सो रिमेंबर कोई और प्राइम नहीं होना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope that all of these concepts of this chapter were clear to you, and if yes, then please like, share and subscribe, and don't forget to mention your reviews in the comment section and press the bell icon so that you can stay updated. Till then, stay safe and stay happy. Thank you.